so first of all we are going to see the मूल्य notes. ठीक है, chapter 5 मूल्य का जो notes उसने दिया था वो हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, chapter 5 ये है दी एलिमेंट कंसेप्ट. तो इसमें क्या है, डोमेन ऑफ द प्रॉब्लम पार्टीशन इनटू सेवरल एलिमेंट्स हम लोग ये करने वाले हैं. उसके बाद ट्रायल फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे और अलग अलग ट्रायल फंक्शन डिफाइन करेंगे हर एलिमेंट का. ठीक है, और हम लोग ये प्रॉब्लम ले रहे हैं, ये जो पार्टिकुलर प्रॉब्लम है ये हम ले रहे हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे. इसमें क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डोमेन का जो डोमेन है वो एक्स ए 1 से 2 तक वेरी कर रहा है. उसके बाद u ऑफ 1 की वैल्यू ये बाउंड्री कंडीशन दी हुई है. ठीक है, उसके बाद सबसे पहले वन एलिमेंट सॉल्यूशन है. वन एलिमेंट सॉल्यूशन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग गैलरकिन रेसिडुअल इक्वेशन लिखते हैं जो सिंपल है कि ये पूरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें सबको एक तरफ ले आओ, इक्वल टू 0 लिख दो, वो हो जाता है r. उसके बाद उसको फाई आई एक्स से मल्टीप्लाई करो, जहाँ पे ये फाई आई जो है ये तुम्हारा वेट फंक्शन है. ठीक है, ओके, तो ये वाला जो है ये दिस इज़ योर वेट फंक्शन. ठीक है, इसको हम लोग वेट फंक्शन बोलते हैं. ओके, ये तुम्हारा वेट फंक्शन है और उसके बाद इक्वल टू 0 इसको इंटीग्रेट करेंगे x से टू एक्स भी. ये तुम्हारे लिमिट्स है, जैसे कि यहाँ पे 1 से 2 था, तो ये तुम्हारा डोमेन का है जो एलिमेंट का है. यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंट ले रहे हैं, तो मेरा जो एलिमेंट का जो लिमिट है वो 1 से 2 हो गया है. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 1 x ए इक्वल टू 1 एक्स बी इक्वल टू 2, तो ये एक एलिमेंट है, इसमें ये दो नोड्स हैं. ठीक है, और इसके बीच में जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो यहाँ पे वैलिड है, तो इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं वेट फंक्शन से. दिस इज़ योर वेट फंक्शन. ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करते हैं x से टू एक्स बी. ठीक है, dx ऑब्वियसली जो तुम्हारा वेरिएबल है इक्वल टू 0. तो ये तुम्हारा बेसिक है तुम्हारा एफ का. ठीक है, ओके. ओके, सो इन हेयर ओके, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम यहाँ पे रेसिडुअल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं. ठीक है, जो रेसिडुअल इक्वेशन है और यहाँ पे वेट फंक्शन है. ठीक है, तो और जो आ रहे यहाँ पे लिख दिया कि एक तरफ ला के इक्वल टू 0. अब सेकेंड स्टेप है जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ठीक है, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ठीक है, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं और उसमें हम लोग क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, क्योंकि ये टर्म इनटू फाई आई होने वाला है. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन है तुम्हारा d बाय डी एक्स ऑफ एक्स डी यू बाय डी एक्स माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. तो ये एक्स स्क्वायर बोलो छोड़ो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इतना इंटू एफ आई करते हैं. ठीक है, इतना इंटू फाई आई. ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने में कुछ भी नहीं है. ये वाला टर्म जो है d बाय डी एक्स ऑफ एक्स डी यू बाय डी एक्स इंटू फाई आई, इसमें हमको क्या लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों लगाना है, वो इसलिए लगाना है क्योंकि ये वाला जो टर्म है इसमें देखो जो u का है, u तुम्हारा क्या है, u है तुम्हारा फील्ड वेरिएबल. ठीक है, u तुम्हारा फील्ड वेरिएबल है, उसका यहाँ पे वो कितना है, ऑर्डर क्या है, डिफरेंशियल ऑर्डर 2. ठीक है, और यहाँ पे फाई का क्या है, 0, क्योंकि ये एज ए फंक्शन है, इसका कोई डिफरेंशियल नहीं है. चूँकि तो हमें आवर मोटो इज, व्हाट इज आवर मोटो, आवर मोटो इज टू हैव टू गेट सेम order of differential for both u and phi. ठीक है, तो ये क्यों होता है ये तुमको आगे समझ में आएगा, क्योंकि यदि तुम्हारा सेम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल है तो तुम्हारा जो मैट्रिक्स हो जाएगा ना वो सिमेट्रिक बन जाएगा. ठीक है, तो वो आगे समझ में आ जाएगा क्यों करते हैं. ठीक है, तो अभी इसमें करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या लगाना है. तो सबसे पहले सिंपल सा याद रखो क्या करना है, जो जिसका ज़्यादा ऑर्डर है, ऑब्वियसली जो फील्ड वेरिएबल है उसका ऑर्डर हाई होगा, तो उसको इंटीग्रेट करना है
और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका दो टर्म आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। पहला टर्म में क्या होता है, सिर्फ ये इंटीग्रेट होगा तो एक ऑर्डर खत्म हो गया और ये वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। और जो तुम्हारा इंटीग्रेशन लिमिट है, क्योंकि वो इंटीग्रेशन करने के बाद का टर्म है, वो उसमें फिर इंटीग्रेशन नहीं है, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा x du बाय dx, ठीक है, इनटू, चूँकि ये इंटीग्रेट हो चुका है, dx इंटीग्रेट हुआ था, इनटू फाई आई, और ये इंटीग्रेशन के बाद फ्रॉम एक्स ए टू एक्स बी, दैट्स इट, ठीक है। ये पहला टर्म है। माइनस, इसके बाद माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस आएगा, उसके बाद क्या करना है, फिर से इसको इंटीग्रेट करना है, ये वाला जो टर्म था, तो एक डिफरेंशियल ऑर्डर कम हो जाएगा, तो सिम फिर से वही टर्म बचेगा x du बाई डी एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन, सो ये हो जाएगा डी फाई आई बाई डी एक्स। ये इंटीग्रेशन में जाएगा कहाँ से, एक्स ए टू एक्स बी। ये देखो, ये इंटीग्रेशन करने का बाद है, तो ये वाले टर्म का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्ट होगा जब तुम ये वाले में एक्स बी पुट करोगे माइनस ये वाले टर्म में एक्स ए पुट करोगे, एक्स की जगह एक्स बी, और एक्स ये वाले पूरे टर्म में जो एक्स रहेगा उस जगह एक्स ए पुट करोगे। तो ये है, तो ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और इसका कैसे आता है, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स काम कैसे करता है वो हम भी देख लेते हैं 2 मिनट में। तो ये जनरली तुम्हारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो बच्चों मतलब 12th में पढ़े ही थे, लेकिन फिर भी एक क्विक रिवीजन, हाउ टू डिराइव इफ़ यू फॉरगेट इट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक्चुअली डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीपल फंक्शंस, 2 फंक्शन से आता है। तो d जैसे हम लोग जानते हैं d ऑफ u v इक्वल टू u dv प्लस v du होता है, ठीक है। अब इसको हम इसको उस तरह से लिख सकते हैं जैसे u dv बराबर d ऑफ u v माइनस v ऑफ du, और इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो u dv बराबर ये वाला जो टर्म है, चूँकि डिफरेंशियल है तो ये u इंटू वी बन जाएगा माइनस v इंटू डी बन जाएगा। अब देखो क्या है, जो डिफरेंशियल जो ये टर्म है, ठीक है, ये तुम्हारा वैसे ही रह गया u, और dv का बस इंटीग्रेशन हो गया, माइनस जो u है, जो टर्म यहाँ पे वैसे ही रहा था, वो टर्म जब डिफरेंशियल हो गया, और dv जो इंटीग्रेट हुआ था वो v टर्म वैसे ही v फिर से इंटीग्रेट हो गया। तो एक टर्म का डिफरेंशिएशन, एक जो ये वाला टर्म है इसमें एक टर्म को बस इंटीग्रेट करना है, दूसरा टर्म को वैसे ही रखना है, और दूसरे टर्म में जो जिसको इंटीग्रेट किए थे उसको भी इंटीग्रेट करना है, और दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट करना है, उसको इंटीग्रेशन में लगा देना है। तो ये तुम्हारा u dv, ये है तुम्हारा पूरा फंक्शन, क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दिस इज योर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, ओके कूल। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। तो जैसे तुम देखे थे कि ये वाला टर्म आता है, ये वाला टर्म जो है वो यहाँ पे सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो x du बाई डी एक्स इंटू फाई आई, ये x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, बस वहाँ पे लिखने के लिए लिख दिया कि that you should not forget कि u and phi are functions of x. So it goes from xa to xb minus integration of again xa to xb x du by dx, जो यहाँ पे अभी हमने लिखा, और यहाँ पे डिफरेंशियल डी फाई बाई डी, यहाँ पे मैं बस dx छूट गया था क्योंकि इंटीग्रेशन तो dx से ही करना है, ठीक है। अब ये माइनस एक्स टू एक्स बी 2/x² है, ये वही वाला टर्म है ऊपर वाला, ठीक है, कि मतलब माइनस 2/x² है, फाई आई से तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो भाई यहाँ पे जैसे कि ये वाला जो टर्म है माइनस 2/x² इंटू फाई आई, ठीक है। तो माइनस 2/x² इंटू कहाँ गया, यहाँ पे आई थिंक देयर इज ए मिस्टेक, ओके। सो हेयर इट विल हैव फाई आई ऑल्सो इन हेयर इट विल हैव फाई आई, 2/x² इंटू फाई आई इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स टू एक्स बी इक्वल टू 0, ठीक है। दिस यू विल पुट एज इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। सो दिस इज योर व्हाट डू यू कॉल इट, द रेसिडुअल इंटीग्रेशन वाला, रेसिडुअल वाला जो है वो है, ठीक है, ओके। सो ये वाला आ गया 2/x² माइनस 2/x² फाई आई डी एक्स। अब क्या करना है, अब तुमको यहाँ पे तुम देखो कि इन हेयर, ओके, इन हेयर ये वाला जो टर्म है, ये वाला एक्स टू एक्स बी एक्स डी यू बाई डी एक्स डी फाई बाई एक्स डी एक्स, ये वाला तुम्हारा मेन इंटीग्रेशन वाला टर्म है, क्योंकि दिस वन इन हेयर यू विल ओनली पुट दी बाउंड्री वैल्यूज, सो दिस विल बी एट लीस्ट नोन और कैन बी फाइंड आउट, मतलब दिस इज, सो इसको हम लोग राइट साइड ले आते हैं, ठीक है। और इसमें भी देखो इन दिस टर्म ऑल्सो यू डोंट हैव द फील्ड वेरिएबल, ओके। सो
phi I is a weight function which you have to assume, which will be as function of x. So whatever you will assume, it will come here. So this can be integrated. This will be known for some cases. It so ये दोनों टर्म को एक साइड ले आओ और ये वाला एक टर्म है जो विद इन विच एक्चुअली यू आर गेटिंग दी फील्ड वेरिएबल टर्म. ओके, सो इसको एक तरफ रख लो. ओके, सो वी कैन टेक दिस ऑन द राइट हैंड साइड एंड दिस टर्म्स इक्वल टू -2x². ये आ रहा है. अब ये इसको हम कहते हैं एक लोडिंग टर्म है ये, और ये बाउंड्री टर्म है क्योंकि इसमें बस बाउंड्री वैल्यूज हमें चाहिए होती है. ठीक है, सो नाउ इसमें देखो जब ओके, नाउ द लोडिंग टर्म इन इंटीरियर डोमेन है. दीज आर ऑल द टर्म इन ओरिजिनल डिफरेंशियल नॉट कंटेनिंग अननोन्स. इसलिए हम लोग आ गए. अब स्टेप 3 में जाते हैं. अब स्टेप 3 में क्या है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करना है जनरल फॉर्म ऑफ ट्रायल फंक्शन. ओके, सो जनरल फॉर्म ऑफ ट्रायल फंक्शन हम कैसे लिखेंगे. तो जनरल फॉर्म ऑफ ट्रायल फंक्शन लिखने के लिए ओके, तो जनरल फॉर्म ऑफ ट्रायल फंक्शन यू की वैल्यू हमको एज्यूम करना है. वो हम लोग करेंगे फाई नॉट प्लस ए जे फाई जे. ये समेशन है ऑब्वियसली. ठीक है, फाई नॉट इज सम फंक्शन ऑफ एक्स विच विल नॉट हैव एनी कॉन्स्टेंट्स असाइन टू इट, एंड ए जे फाई जे. सो ए जे आर दी कॉन्स्टेंट्स. तो तुमको क्या करना था, इस पूरे जो एफ का मोटो है वो तुम्हें फील्ड वेरिएबल फाइंड आउट करना है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स. तो तुमने कुछ फील्ड वेरिएबल एज्यूम किया है जो ऐसे है. तो चूंकि these will be function of x, so to find the final form of you have to only know, okay, you have to only find AJ's, right? AJ's, you have to find these AJ's. Okay, these AJ. So this is now our motto. So now if you, as soon as you will put these AJ, if phi naught plus, हम लोग आगे देखेंगे कि this phi naught will be also gone. We will only end up with A1 phi 1. This we will see later. Okay, A2 phi 2 plus A3 phi 3. ठीक है, इस तरह से हम लोग चलते जाएंगे. Now अब हम क्या करेंगे, u की वैल्यू जो ये थी ये हम यहाँ पुट कर देंगे. तो क्या आ जाएगा मेरा x, यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया. इस इक्वेशन में कहाँ गया, यहाँ पे. ओके, इस इक्वेशन में हम लोगों ने पुट कर रहे हैं. तो x डी फाई नॉट बाई डी एक्स प्लस समेशन ऑफ ए जे फाई जे, और ये डी फाई आई बाई डी एक्स था जो यहाँ पे आ गया इंटू डी एक्स एक्स ए टू एक्स बी. ओके, तो पहला जो एलएचएस वाला टर्म है वो ये बन गया है. ओके, नाउ अनदर थिंग इज दिस. सो अगेन यू कैन री राइट दिस एज फाई नॉट को तुम अलग कर लो. ठीक है, फाई नॉट वाला टर्म अलग हो गया बिकॉज दिस इज नॉट ए वेरिएबल. इसमें कोई एजे अननोन चीज़ नहीं है. फाई वाई, बिकॉज फाई यू आर गोइंग टू एज्यूम, यू नो व्हाट फाई इज, you will assume and you will solve the problem according to that. So it doesn't contain any constant term which you have to find out, so it is also kind of known and we can take it to the other side. Okay, so finally we will have only these terms. Okay, so integration of x a to x b phi I d phi I by dx into x into d phi j by dx into dx, और integration of phi j. उसके बाद हम लोग क्या करना है, अब हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो टर्म है ये हम के आई जे बोल देते हैं क्योंकि यही स्टिफनेस वाला टर्म बनता है. ओके, एंड देन दिस वन इज योर, ये हम लोग देखे थे शुरुआत पहले आ रहा था, ये वाला टर्म हम लोग बाउंड्री टर्म बोले थे. और ये डी फाई आई वाला जो टर्म है ये वाला भी एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, डी फाई नॉट वाला. ओके, ये पूरे जो आर एच एस वाला टर्म है उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये एफ आई टर्म है और ये के आई जे टर्म है. ठीक है, सो नाउ you know what is ki j, you know what is fi. ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हमको इसको लिख सकते हैं कि ki j. ओके, हम लोग लिख सकते हैं कि ki j into aj is equal to fi, where fi is known, aj you have to find out, right, and ki j using the ki j equation. Right, so now all the constants have come here. This is a matrix which will be known, this is a matrix which will be known, and you have to find these ages so that you will finally find the u value. So this is the matrix which you have to solve, which is pretty interesting, isn't it? Right, okay, so now अभी जैसे कि के आई जे फाई जे हो गया, निकल गया मेरा एफ आई निकल गया. अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे स्टेप 4 पे. अब डेवलप स्पेसिफिक एक्सप्रेशन फॉर, अब हम लोग फाई आई, अभी तक हम लोग को फाई आईज नहीं पता है. ठीक है,
हम लोग अब फाई आई डेवलप करेंगे, हम बोलेंगे भाई अब हमको फाई आई चाहिए। तो अब फाई आई डेवलप करने के लिए यहाँ पे चैप्टर 5 की जगह हम डायरेक्ट तुमको बता देते हैं कि कैसे फाइनली हम लोग करने वाले हैं। ये स्टेप बाय स्टेप जाना उतना वो नहीं है। तो फाई आई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यू, तो जैसे कि तुमने डिसाइड किया कि भाई हम u को लीनियर मानेंगे या क्वाड्रेटिक मानेंगे या क्यूबिक मानेंगे, ठीक है। तो u कैन बी लीनियर, u दिस इज योर एजम्पशन राइट, और क्वाड्रेटिक, और मोर देन दैट, ओके क्यूबिक। तो लीनियर के लिए तुम्हें कितने कांस्टेंट्स होंगे, a1 प्लस a2x, यहाँ पे a1 प्लस a2x प्लस a3x स्क्वायर, यहाँ पे a1 प्लस a2x प्लस a3x स्क्वायर प्लस a4x क्यूब। सो 2 कांस्टेंट्स, यहाँ पे 3 कांस्टेंट्स और यहाँ पे 4 कांस्टेंट्स। सो टू actually get the u function, you should solve for 2 constant, 3 constants and 4 constants for linear, quadratic and cubic. So in that case हम लोग अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। मॉडिफाई क्यों करते हैं, क्योंकि a1 a2 फाइंड आउट करना है, तो थोड़ा हम लोग इजी सॉल्व करने के लिए ओके हम लोग ये करते हैं कि ये 2 कांस्टेंट्स का मतलब है अगेन यू विल नीड 2 इक्वेशंस राइट, यू विल नीड 2 इक्वेशंस, 3 कांस्टेंट्स एटलीस्ट यू विल गेट नीड 3 इक्वेशन राइट। ओके तो जो फाई है ओके तो हम लोग ये बोलते हैं कि u बराबर, हम लोग बोलेंगे u बराबर ओके a1 फाई 1 प्लस a2 फाई 2 प्लस a3 फाई 3। इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्म आई एम राइटिंग इन दिस फॉर्म if it is obviously 3 कांस्टेंट है, so if it is quadratic, if quadratic, और यदि 2 टर्म है तो a1 फाई 1 प्लस a2 फाई 2 ओके, and such that phi I will have value 1 at ith node and 0 at other nodes. This is very important. Okay, this is awesomely important. This is big star mark. Okay, this so now for that, so यदि phi 1 हम ले रहे हैं तो यदि हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे x माइनस x2 डिवाइडेड बाय, यदि लीनियर है, इफ लीनियर ऑब्वियसली, यदि पहले हम लीनियर के बारे में बात करेंगे ज़्यादा समझने में आसानी होगा। तो x माइनस x2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, नाउ यू पुट x इक्वल टू x1, दैट इज योर फर्स्ट नोड राइट, x1। तो x1 माइनस x2 1 हो गया, जैसे ही तुम x2 पुट करोगे 0 हो जाएगा। सो इट इज सेटिस्फाइंग आवर डेल्टा प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड द डेल्टा प्रॉपर्टी। 1 मिनट, दिस इज डेल्टा प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस इज योर डेल्टा प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज डेल्टा प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ सिमिलरली phi 2 you will say x minus x1 divided by x2 minus x1, ठीक है, if linear obviously. Now if it is quadratic, so that you will have 3 constants, so 3 nodes, 3 phi's, so x minus x2 into x minus x3 divided by x1 minus x2 into x1 minus x3 right. Similarly phi 2 will be x minus x1, क्यों कर रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा टफ तो है नहीं, डिवाइडेड बाई x1 minus x2 minus x1 into x2 minus x3. Pretty simple. You know what we are doing this because we are in the numerator, we are subtracting x with all other nodes apart from for which it is. So वह एक के जगह 2 और 3 बचता है, एक को छोड़ के, तो x minus x2 में, क्योंकि कहीं भी तुम x की वैल्यू वो डाल दोगे तो one of the term will become 0 which will make the whole phi will 0, go to 0. So इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? Similarly you can write phi 3 right, not a big deal. You can write x minus x1 into x minus x2 divided by x3 minus x1 into x3 minus x2 right. Now
नाउ ये phi 3 हो गया. ओके अब सिमिलरली यू कैन राइट फॉर क्यूबिक, नो बिग डील. सो इससे मिलता क्या, व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस. क्वेश्चन इज व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस. What you are getting from this. So answer is pretty simple. Answer is this. Your constants is now has become become the value of field variable itself. Of field variable itself, right? So how? Let's see that. Okay. जैसे ही तुम ये माने थे, मान लो ठीक है, हम क्वाड्रेटिक माने थे. So now as soon as you will put u at x1, right, this term will become 1, this will go to 0, this will go to, so u at x1 becomes a1. That is, the value of field variable at x1 is become a1. Similarly, the value of field variable at x2 will become a2 because phi 1 will become 0 at x2, and again phi 3 will be 0 at x2. So u at x2 will become a2 and phi 2 is 1. So similarly, this definition, this we call it Lagrangian definition. So whatever, what you need now, you need to know how to solve. What is called, what is that called, you just forget about it. You can learn not in a quick videos like this. Okay, so this particular formulation is known as Lagrangian formulation. For just to tell you, this formulation is known as Lagrangian formulation, right? So it gives you a great opportunity to reduce your calculations, right? So now the variable, as soon as you will find the a1 a2 value, you know what actually you were finally looking for. Otherwise, what you had to do is, you know now a1 a2 a3 separately by assuming some other phi's, and then you calculate a1 a2, and then if you want u at node, then you will again put that x value in the node in that equation of u, that is a1 plus a2 phi 2 plus a3 phi 3. Okay, and then you calculate u at again. So those calculation has vanished completely, so you don't have to do those calculations now. As soon as you will find the variable, that is your solution, right, at nodes. Now you have assumed these things, and then yeah, so now what you have to do, now what is left, now your next task or next step, recall the equation, and the equation was something like this: the integration of d phi I by dx into x, which was there in the, and d phi j by dx, okay, into dx, okay, integration from xa to xb into aj is equal to some f of I term, which is integration which will have phi i's and all. So in here now what you are seeing, you have assumed phi I, you have got the phi I, such a beautiful phi I, okay, and you will just put all those phi i's in here in the calculation, and you just, now what you will get when you will put the phi i's in here, तुम्हें पता चल जाएगा कि integration, मतलब you can perform the integration, right? Because everything will be x, you know the xa to xb, because this is xa to xb is not for the whole domain, for the element. This xa and xb is for the element. Note, don't forget, xa and xb is not for whole domain but for element, because we are calculating all this stuff for the element, and in a domain there can be many elements, right? The differential equation
however is valid for the whole domain. But what we have done, we have discretized that whole domain into several small parts, and these phi i's, okay, these phi i's is valid for that part only. So another important point, these above phi i's or these phi I equations are valid only for the elements for which it is defined. Okay, it is defined and not for others. Okay, okay, so only for that element. So I mean, whenever you will get u displacement in terms of a1 phi 1 a2 phi 2 a3 phi 3, because when you will solve for that element, a1 a2 a3 will be different. Okay, so when you will move to the next element, the previous element solution doesn't hold to the next element, because next element will have its own solution. Okay, while the differential equation is same, but the solution, the a1 a2 a3 what you will get will be different. So the previous element and this element, so every element will have its own solution. Okay, so just keep it in mind. Right, so now as soon as you have found the phi i's, okay, so we will just again move back. So यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो कि आई जे बराबर ये टर्म था. ओके, अब हम लोग लिखते हैं अलग अलग टर्म. ठीक है, जस्ट ओके, यहाँ पे देखो ए जे है और आई इज what is your free index. So as now suppose you are assuming quadratic, let's stick with linear, because it will have only two variable, it is easy to write in here. I don't have to struggle much, I have to spend much energy. So the first equation with linear, so we need what? We need two equations, right? We need two equations. And what else we need? We need obviously two equations. So two equation कहाँ से आएगा? वो two equation तुम्हारी यही equation है, by where you will change I1 I2 1 to 2, and when you will put I equal to 1, for I equal to 1, the equation you will get is xa to xb. Obviously the domain is same for the element. Okay, so d phi 1 by dx into x into d phi 1 by dx. okay, यहाँ पे j के टर्म यहाँ पे j है. okay, so don't miss, and here is aj. so what I am doing is I am writing it in a form of what? Matrix. So here is the matrix xa to xb d phi 1 by dx into x into d phi 2 by dx. क्यों phi 2? Because it is matrix, dude. Here is come a1 and a2, right? So this into a1, this into a2. So aj phi j, phi j aj. So phi 1 a1, phi 2 a2, right? This is going interesting, isn't it? Now from looking unsolvable equations, we are getting something which is tickling our brain, isn't it? Right, so now we will proceed and we will write in here xa to xb and d phi. Again what? Here will be 2. Why? Because now I is equal to 2. For the second equation into x, again d phi 1 by dx. Why 1? Because you again have to multiply a1 in here, so this is in matrix form, right? So d phi 2 by dx into x into d phi 2 by dx. okay, is equal to some fi term, which I will discuss later. So now you see what an amazing thing has happened. This k has become symmetric. This is equal to this. You see, phi 1 phi 2 phi 2 phi 1, this term into this, and obviously I have missed the dx.
obviously you are doing integration, so you will have to write this dx because you are integrating with respect to x. Okay, anyways, that doesn't matter much. Fine. So now you have, d phi 1 by dx. What was our phi's? Phi 1, because we are taking linear, so x minus x2 divided by x1 minus x2. Do you remember? This will satisfy the delta property. So at x1 it will become 1 and x2 it will become 0. And phi 2 is x minus x1 divided by x2 minus x1. So यहाँ पे कैसे आ रहा है? यहाँ पे x2 put करोगे, it will become 1. So here is x2 minus x1. Interesting, isn't it? Now what we have to find d phi 1 by dx, क्योंकि इक्वेशन में तो पुट करना है. So d phi 1 by dx, what you will get? D phi 1 by dx is only 1 minus x1 minus x2, which is minus 1 by L, because x2 minus x1 L is length of element, and d phi 2 by dx is equal to what? 1 by L again. That is so interesting, isn't it? x2 minus x1. Obviously x2 minus x1 is your length of the element, for the linear element. Okay, 1D element I mean. Okay, so and phi 1 phi 2. Now you will put this value, because you see these are the constant values, which is so interesting, because as soon as you will put this constant, only x dx, because constant will come out, and x dx you integrate. Here also constant will come out, constant will come out, constant will come out. You integrate everything, and you will see that everywhere the integration is same. So x square by 2 into dx, x by xa to xb, which will all solve it so well, and this one will be such a nice looking matrix, right? And even a2 and f of phi will be there. So now you can easily solve this. Now as soon as you will get the fi thing, and there are something you should be aware of in finding fi, okay, because that will depend on the boundary conditions. So till now you have not used the boundary condition. Have you seen that? This is just all the mere repetition. Even if you'll solve for many problems, it doesn't matter, because as soon as you will here, what you should note. Okay, so now what you have, what you need now to find f of I, what is that? So as you can see in here, fi1 fi2 fb1 तीन चीज लिखा हुआ है, ठीक है. तो fi term was this, minus xa to xb 2 by x square, right, phi I dx minus again xa to xb. okay, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो फाई नॉट वाला टर्म था वो हम लोग कम्प्लीटली अब एलिमिनेट कर चुके हैं. वी आर नो लॉन्गर सेइंग दैट u इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस a1 फाई 1 प्लस a2 फाई 2. वी आर ओनली सेइंग दैट u इज इक्वल टू a1 फाई 1 प्लस a2 फाई 2. चूँकि फाई नॉट हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं, तो हम लोग, यदि तुम पीछे रिवाइंड करोगे एंड व्हेन यू विल चेक, देयर वाज ए फाई नॉट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड, बिकॉज फाई नॉट टर्म will not have any thing with it, so you can just take it on the other side, right? Okay, so in that case you will be only left with, in when you have assumed u equal to a1 phi 1 plus a2 phi 2, and phi's are the Lagrangian polynomial which satisfies the delta properties. So this one, right, will not be any integration, while it will be your good old friend, which helps you a lot, is this minus x du by dx phi I from xa to xb. Now this is very interesting. Just see this. Okay, what was your boundary conditions? Do you remember that? The boundary conditions was this, if you have forgotten. Boundary conditions was this, which we will write in here, and it is u at 1 is equal to 2. Here, just to remind you again, here we are taking only one element for the whole domain, okay? While in between I was keep reminding you that the element, this integration
these xa and xb may not be for the full domain. That is, in the whole domain you can have multiple elements, so xa and xb will not be the endpoints of the domain, right? While in here we are only using one element, so these xa and xb is the endpoints of the domain, right? So u of 1 is equal to 2 and minus x du by dx, okay, at x equal to 2 is equal to 1 by 2. Now this is pretty interesting. Are you able to see this? Minus x du by dx minus x du by dx, looking very cool, isn't it? Right. Okay, so x से to x बीत गया, यहाँ माइनस पे रखा, यहाँ पे रखे. अब तुम्हारे पास obviously k1 1 था, k1 2 था. Are you able to recall it? k2 2 था, यहाँ पे a1 a2 था, तो यहाँ पे क्या आएगा? f1 and f2, right? Yeah. So now look in here. fi1, what is fi1? fi1 is your f1 is minus integration of xa to xb. As you can see in here, I will not write xa, you will put x minus x2. I was using x1 x2, so yeah, that doesn't matter, so I will still write in here. Okay, that will be a bit confusing what I was telling you, so I will write it. So phi1, what was phi1? Phi1 was pretty simple, x minus x2 divided by x1 minus x2, right? This was your phi1 into dx. Can you integrate it? Oh, pretty simple, because xa equal to 1, xb equal to 2, right? This will become phi1 minus. Now here it is a big thing. Just see what you are going to do in here. This is the very basic, important thing in FEA. So what it is? Minus x du by dx. What I will write it in details. Okay, so just bear with me. It is going to be very amusing. So what I will write is this: minus x du by dx at xb into phi1 at xb minus, right? And this is what you do, right? Minus again of minus x du by dx at xa into phi1, because we are still in I equal to 1. This is I, you remember? This is I, so I equal to 1. For the first f1 we are writing at xa. So now what happens in here? This phi1 goes to 0 at xb, because it is x2, obviously. So xb, x2, xa is 1, and this goes to 1, this particular phi. So this term will just vanish out, and this term will be left as minus x du by dx at xa, right? That's it. So I can write f1 as, okay, what about f2? What about f2? f2 will be again minus integration of xa to xb, 2 by x square, x minus x1 divided by x2 minus x1, okay, into dx, minus, again the same thing will repeat in here, and as you are repeating that, now you will see that phi2 will come here and phi2 will come here. So phi2 at xb is 1 and phi2 at x1 is 0, so only this term will be left out, and in here will be left, and in here it will be minus x du by dx at xb, right? This is this. So if I will write in the matrix, I will get this. What I will get? Fi
integration of xa to xb minus 2 by x square x minus x1 divided by x2 minus x1 into dx. Okay, oopsie, it should be 2, it should be 1 minus 2, right? Because it should be phi 1 because we are writing fi. Okay, right? Minus you have to note one thing in here, that here is minus and again here is minus, right? So this minus and this minus will make it positive, right? And this minus will be obviously in there, or I am not touching that minus, so it will become positive, okay, of minus x du by dx at x equal to, or I can just say that it should be xa, right? And the next term will be, again this is going to be the same, here it is xb, or I can say x1 or x2, 2 by x square x minus x1 because it is x2 minus x1 into dx. Okay, in here it will be minus. Why minus? Because here it is minus and this is the first term, so it will be minus x du by dx at xp. So this is your fi term, right? So this is your fi term. Now you see what was your boundary condition. Now it is very interesting to just look, right? Now you boundary with the minus x du by dx at x equal to 2, that is xb, because that is the other end, equal to 1 by 2. So you know this in here, right? Which you know, this one, this whole term, right? This whole term is 1 by 2. You know this integration because you know xa xb, that is your 1 and 2. You know this integration, but you don't know this, right? This one you don't know what is minus x du by dx because it has u, right? It has u, and at xa you don't know what this value is, so this is unknown. What you will do, that's very that, right? So that is why we say, now you recall what you recall, the matrix equation, the original Kij. What we said this into a1 a2 is equal to f1 f2. Now this one is known and this one is unknown because you don't know one term, which includes u, which is your solution, right? Which you feel very well, which you want to find out, so you don't know. While in here, now you again see what was your equation, the boundary condition, u1 equal to 2, so you know, and wow, this one is known, this one is known, this is so nice, and this one is only unknown. So are you seeing this? This one is unknown, so one thing is known, one thing is known, one thing is unknown, right? So equation is all making sense. So that's why it is always told that at least specify. That's why we say, okay, in big words, in big capital, at least specify one boundary condition at each boundary of domain. Now you will say, if we are specifying the boundary at the domain, how come when you will discretize it into many elements, the elements, the other end, one end of the element will not lie on the boundary of the domain, right? So you will not know these values. Suppose what I am saying is this, right? In here what is happening, I will tell you that what I am talking of, जो अभी मैं बोलना चाह रहा हूँ, but first of all I will just complete this and then I will talk about what I was trying to say right now. So in here what is happening, so this term is known,
So, okay, k11, k12, this is all known. K21 and k22, this is all known. It is all L1 by L1 by L square, something like that, and this is known. So now what is happening in here? Now you want find a2, right? So if your unknown is find a2, just multiply this into this and is equal to this. So it is just simple this: a1 into k21 plus a2 into k22 is equal to f2. It is known, right? This one is known, a1 is known, this one is known, k22 is known. So you can find this. And to find f1, right, or I should say to find this term minus x dv by dx, which was unknown at xa, which we call it flux. Okay, but I'm now I think I should define it is better. This term is called flux. Okay, or this term, the minus x dv by dx is called flux. So flux at xa and flux at xb. So now to find that flux, you can use this equation, because now you know a2, right? You can use that to find that. So again you can write k11 a1 plus k12 a2 is equal to f1, unknown, unknown. Now it is known. I mean, it was known, now it is known, and this is also known. So you can find, oh wow, so nice, isn't it? So अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या नोन रहता है. एक अननोन या एक नोन तो होना ही चाहिए ये दोनों में से to solve the equation, right? You will not always get this and you will have to find this, or you will not always get this to find this. So it is always one of the two is given. And so what I was trying, अभी थोड़ी देर पहले मैं अभी बोल रहा था कि what if this is your domain, right? And you have discretized it into 1 2 3 4. So what about this element? You only specify boundary condition at these 2 points. Okay, so इसके लिए तो कुछ भी पता नहीं है. इसके लिए यदि मैं मैट्रिक्स लिखूंगा, suppose ये 1 2 3 4 5, so I will write here a2 and a3, right, is equal to sum f1 f2 and f3, right? So now मुझे ये पता होगा, क्योंकि it will have the term flux, which you don't know because it has u term, the field variable in it, like minus x du by dx, right, at suppose x2, and it will have minus x du by dx at x3. ओके, इसके लिए लिखोगे तो ये हो जाएगा. a2 a3 भी तुम्हें पता नहीं है क्योंकि ये बाउंड्री पे आता नहीं है, इसका बाउंड्री कंडीशन होने से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब it will be unknown, this will be unknown. How you will solve? So nice question, isn't it? So the question is solved. There is an answer, because when you will assemble these elements, okay, when you will assemble these elements, what will happen, that if there is no loading at these points, right, no additional loading, no point loading at these points, then when you will assemble, then these terms will get added with the other, because these nodes is shared by this element and this element, right? So when you will write the equation of this term will come into that, and when you will write the equation, this matrix equation for this element, then also this term will come. And if you will notice that these terms has opposite sign, here it is plus, here it is minus, right? So one end of the node will have plus, one end of the node is minus. So what will happen is, for this element, when you will write this flux term is one of the like minus or plus, so it is minus. So this term will have minus in it, minus x du by dx at x3, and for this element it will be plus minus x du by dx at, because it is x3, sorry, x2. Okay, so when you will assemble, these terms will get added up and will become 0.
if no point load, and if the point load is there, then you know the point load because it is the input and you can put it directly in there, right? If no point load, right? So this one, now in this you will have this as 0 or the point load value. Similarly, F3 will be for these two elements and it will become 0 when you will assemble. So A2, A3 can be find out because right hand side is no. When you will assemble, there will be a big matrix instead of A2, A3, A1 will come, A4, A5 will come, and here it will be big matrix. So finally what you will get is some matrix. I will not write in here. So finally what you will get is some matrix into A1, A2, A3, A4. In here, this is the boundaries, right? For A1 there will be a boundary, so minus, it will be plus, right? The first one is plus, so it is plus x du by dx at xa. It all becomes 0 if no point loading 1 2 3 4 a5 is there. Okay, 1 2 3 4 and minus x du by dx at xp. So either again is these things are unknown, these things are unknowns, these are unknowns, these are known values. Now at the boundaries, either this will be given or this will be given, or this will be given, or this will be given. And one more thing in here you should know, that if you will give only these two values, right, and you think that you can solve this equation, but you cannot. The reason is this will have infinite solution in that case if you will give this value and this value, because you are only giving the forces. There are no constraints in with respect to displacement, so you are only applying forces, so it will become a problem like this. So this is a bar where you have applied force F1. Obviously you have to apply F1 in here. What is the solution of this problem? Infinite solutions, because there is no constraint, there is no point where you can say that, because it can move randomly in the space, right? It can be here, it can be here, where when your coordinate system is here, it can be here, it can be here, it can be here, anywhere, right? So there is no constraint. As soon as you, so at least A1 or A5, anything has to be constrained, either 0 or 2 or 5 or anything, right? So ये एक चीज़ नोट करने के लिए और है. तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया है, ठीक है, B1 B2 ये सब हम लोगों ने देख लिया कैसे न्यू. अब हम लोग इंटीग्रेशन, अब हम लोग जाते, अब अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया कि जब इसमें तो देखोगे तो जो भी ये इंटीग्रेशन वाला टर्म था हम लोग इंटीग्रेट मैनुअली कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम कंप्यूटर में ये फीड कर सकते हो? तो इसके लिए नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं. न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमें ऑब्वियसली करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग गॉस पॉइंट मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है. तो जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टाइम डिटेल में. तो उसमें क्या होता है, तुम गॉस पॉइंट्स लेते हो. यदि लीनियर एलिमेंट है तो एक गॉस पॉइंट होगा, यदि क्वाड्रेटिक एलिमेंट है तो 2 गॉस पॉइंट होंगे, क्योंकि 2 गॉस पॉइंट 3 पॉलिनोमियल तक सॉल्व कर देता है. इस टाइप्स के कुछ है कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन तुम्हें मिल सकता है. जब तुम गॉस पॉइंट्स लेते हो तो जो इंटीग्रेशन होता है उसमें इंटीग्रेंट इनटू वेट को तुम ऐड करते हो, I1 W1 प्लस I2 W2, वेयर I इज़ द इंटीग्रेंट, W इज़ द वेट. तो गॉस इंटीग्रेशन हम लोग यूज़ करेंगे. तो उसमें बस क्या है कि जैसे ही तुम लीनियर एलिमेंट डिफाइन किए वो तुम्हारा गॉस इंटीग्रेशन डिफाइन हो गया. और ये वाला जो पॉइंट है, दीज इंटीग्रेशंस, सो व्हाट यू विल डू, तो उस गॉस पॉइंट के लिए तो x की वैल्यू तुम रखोगे. एक्चुअली उसमें जब तुम गॉस में रहते हो तो तुम चेंज कर देते हो अपने कोऑर्डिनेट को फ्रॉम x टू जीटा, वो सब देखा जाएगा. बट ओवरऑल ये है कि ये सब वेरिएबल्स है, उसमें तुम गॉस पॉइंट के वेरिएबल है तो I1 निकालोगे, उसको वेट से मल्टीप्लाई करोगे और सब सिर्फ सम अप कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी. सो तुम्हें एनालिटिकल इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है. और सेम K11 K12 भी, वहाँ भी तुम्हारा इंटीग्रेशन आता है, वहाँ भी तुम्हें सेम चीज़ करनी है. वहाँ भी तुम्हें x की वैल्यू है, मतलब x के रूप में इंटीग्रेशन है, तो तुम वैल्यू डालोगे गॉस पॉइंट्स का और फिर W1 x1 मतलब W1 I1 प्लस W2 I2 करके उसमें तुम इंटीग्रेट कर दोगे. सो दिस इज that would be the one of the last topics, but
In addition to that, there is one more thing, that flux calculation. That is a very confusing पार्ट. ओके, तो फ्लक्स कैलकुलेशन जब करते हैं तो इसमें यहाँ पे यदि तुम फ्लक्स कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो यदि तुम मल्टीपल एलिमेंट्स, अभी यहाँ पे एक चीज़ और है कि तुम, हम लोगों ने बस वन एलिमेंट, अभी हम लोग असेंबली कंडीशन नहीं पढ़ा है. जब तुम असेंबली करोगे तो तुम जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि फ्लक्स सारे जीरो हो रहे हैं, ठीक है, तो ये असेंबल नहीं करने इसमें जीरो हो रहे हैं. बट इफ़ यू वांट टू फाइंड द फ्लक्स एट द नोड्स, it will not be zero, right, because it will be experiencing some forces, right? So that forces, but some of the forces is zero because there is no net force. So when, if you want to find the flux value at these points, right, so what you have to do is इस points में तुम flux के लिए u निकल गया तो माइनस एक्स डी बाई डी एक्स निकालोगे, फिर उस तुम नोड के लिए निकालोगे, ठीक है. तो जब तुम गॉस इंटीग्रेशन करते हो तो उसमें तुम गॉस पॉइंट्स के लिए फ्लक्स निकालते हो, चूँकि वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है, ठीक है. तो इस तरह से अपना चलता है. अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट टाइम देखते हैं. सो फ्लक्स कैलकुलेशन भी है और मेनी एलिमेंट्स के लिए भी है, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि कैसे बाउंड्री कंडीशन, इसमें एक बार देख लेते हैं न्यूमेरिकली इवेल्युएट इंटीरियर डोमेन्स, ठीक है. यहाँ पे इवेल्युएट कर लिया गया है. यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यूज़ है जो मैंने बताया, ये वाला जो -2/x² का इंटीग्रेशन वाला है, ये वाला मैंने बता ही दिया कि कैसे करते हैं, ठीक है. और यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे तुम इंस्टेड ऑफ, जैसे कि a1 दिया हुआ था, a2 निकालने के लिए पहले मैंने उसको डायरेक्ट मैट्रिक्स को तोड़ के इक्वेशंस बना दिया और तब सॉल्व किया. यहाँ पे ये बोला गया है कि कैसे तुम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से रहने ही दोगे, मतलब कंप्यूटर को कैसे मतलब बताओगे कि तुम्हें कंप्यूटर को क्या करना है सॉल्व करने के लिए, राइट. तो रो, किस रो को किससे माइनस करोगे, कैसे हटाओगे उसको, वो सब चल रहा है इसमें. ये सब भी थोड़ा देखा जा सकता है, बट ये बेसिक्स इतना ही है. अब इवेल्युएट फ्लक्स की वैल्यू -x/d/dx था, तो u की वैल्यू तुम्हें पता है, तो उसको प्रत्येक एलिमेंट, जिस एलिमेंट के लिए निकालना है. अब तुम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखो कि जो फ्लक्स है, जैसे कि अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है. अब ये दो एलिमेंट में मैंने बोला कि जो हर एलिमेंट के लिए अपना u का वैल्यू होता है, जो तुम सॉल्व करोगे तो u बराबर a1 ϕ1 प्लस a2 ϕ2, तो इस एलिमेंट का एक a1 ϕ1 होगा, इस एलिमेंट का एक a1 a2 होगा, इस एलिमेंट का एक a1 a2 होगा, इस एलिमेंट का एक a1 a2 होगा, इस एलिमेंट का अपना अलग a1 a2 होगा. तो u का जो डेफिनेशन है वो इस एलिमेंट के लिए कुछ और, इस एलिमेंट के लिए कुछ और, इस एलिमेंट के लिए कुछ और है, ठीक है. तो जब तुम फ्लक्स निकालोगे, ठीक है, तो फ्लक्स तुम इस पॉइंट का निकालोगे, लेकिन तुम ये a1 a2 जब निकाल रहे हो, लेकिन तुम ये एश्योर कर रहे हो जब कैलकुलेट करते समय, जब तुम मल्टीपल है तो तुम देखोगे ये एश्योर कम से कम कर देते हो कि a2 इसके लिए और a2 इसके लिए सेम होगा, ठीक है. वो तुम जब असेंबल करोगे उसी समय तुम वो चीज़ इन्फोर्स कर देते हो कि इट कैन नॉट बी डिफरेंट, राइट, क्योंकि a2 इज़ द डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट एंड it has to be same for both the element for the same node, right. But flux, we don't enforce the flux thing, right, कि इसके लिए फ्लक्स और इसके लिए फ्लक्स सेम होना चाहिए इस पॉइंट पे. तो क्या होगा, अब तुम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो इस नोड का इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में और इस नोड का इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में. क्या, क्यों अलग अलग आ रहा है, क्योंकि u का जो इक्वेशन है वो इस एलिमेंट के लिए अलग है, इस एलिमेंट के लिए अलग है. तो -x/du/dx जब इस एलिमेंट का u डाल के करोगे और x = x2 पुट करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, और जब u का इस एलिमेंट के इक्वेशन में डाल करोगे और फिर x = x2 पुट करोगे तो कुछ और वैल्यू आएगा फ्लक्स का. और वो डिफरेंस ऑफ फ्लक्स एक्चुअली टेल्स यू कि हाउ मच एरर इज देयर इन योर सॉल्यूशन, राइट. तो इस तरह से तुम्हारा फ्लक्स का कैलकुलेशन होता है, ओके. तो उसको एवरेजिंग करते हैं, ठीक है. जब तुम अब तुम फाइनल जो फ्लक्स का इक्वेशन वैल्यू दोगे वो ये दोनों के एलिमेंट का वो निकाल के उसका एवरेज कर दोगे और बोलोगे कि भैया मेरा ये तुम्हारा आ गया है फ्लक्स का वैल्यू उसमें, ठीक है. अब इसके बाद यहाँ पे 2 एलिमेंट सॉल्यूशन है जो तुमको बाद में देखा जाएगा, मतलब इसमें बस असेंबली प्रोसेस है और थोड़ा फ्लक्स कैलकुलेशन का वो है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं. तो बेसिक्स तो यही है और उसके आगे और देखेंगे कभी. चलो, थैंक्स.